Hi kids, we are starting a new chapter, chapter number 17, punctuation marks from the book English Grammar 5. We have punctuation marks. We use punctuation marks in order to take the meanings of written words clear. Some of the important punctuation marks are, तो punctuation marks का हम यूज करते हैं ताकि जो हम लिख रहे हैं राइटिंग में उनको हम क्लियरली समझ पाए, उनका मीनिंग हम प्रॉपरली समझ पाए. ओके, we have different important punctuation marks. First is full stop, this is the sign. Then second question mark, this is the symbol. Then third exclamation mark, this is the symbol. Then fourth comma, this is the symbol. Then fifth capital letter. Then sixth we have quotation marks or inverted commas. Okay. Now first we'll talk about full stop. We use full stop at the end of a sentence that is not a question or an exclamation. हम कोई भी सेंटेंस के एंड में जो कि क्वेश्चन नहीं हो या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस नहीं हो उनके एंड में फुल स्टॉप पुट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल, माई नेम इज अंशुमन. ओके, here you can see we have put the full stop here. Okay, then with abbreviations के साथ भी हम full stop use करते हैं. Example, BA, here you can see MA, MP, MLA. These are the examples. Then we have question mark. We use question mark at the end of an interrogative sentence. Interrogative sentence के end में हम question mark put करते हैं. Examples, first, what is your father's name? Now here you can see. Okay. Second, who is your class teacher? Here you can see. Okay, we have used question mark. Then we have exclamation mark. An exclamation mark is used at the end of the sentence that expresses a strong and sudden feeling. Exclamation mark उन sentences में use करते हैं जो कि strong और sudden feeling को express कर रहे हो. Examples, first, hooray, we have won the match. Then second, bravo, you played well. Okay, here you can see we have put the exclamation mark because these words show strong and sudden feeling. Okay, then we have comma. We use comma to indicate items of a list. लिस्ट में जो भी आइटम्स है उनको इंडिकेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई बॉट 2 पेन्स, 3 पेंसिल्स एंड 5 crayons. दिस इज द लिस्ट and we have separated different items with the help of comma. Okay, this is comma. Okay, then to separate a direct statement before or after he said, she requested, etc. एक direct statement को separate करने के लिए भी हम comma का use करते हैं. Examples, first, he said Hemant is a good boy. Now he said, we have put the comma here. Okay, किसने कहा? सो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये थी, हमने सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज किया. देन सेकेंड, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शी रिक्वेस्टेड. नाउ फॉर द रिक्वेस्ट वी हैव पुट कॉमा अगेन हेयर. देन फॉर सेपरेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड वी हैव अगेन पुट द कॉमा हेयर. देन टू सेपरेट वर्ड्स यूज फॉर एड्रेसिंग पीपल, जब लोगों को एड्रेस करते हैं पर्टिकुलरली तो भी हम कॉमा पुट करते हैं सेपरेट करने के लिए उनके नेम को बेसिकली. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, अजय कम हेयर. नाउ हेयर यू कैन सी. ओके, सेकेंड, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, राघव. ओके, देन थर्ड, कम इन गौरव. ओके, हेयर वी हैव यूज्ड कॉमा. ओके, to separate a question tag from the remaining part of the sentence. क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए रिमेनिंग सेंटेंस से. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू. नाउ दिस इज द क्वेश्चन पार्ट एंड दिस इज द सेंटेंस पार्ट. टू सेपरेट दिस पार्ट वी हैव यूज्ड कॉमा हियर. ओके, देन सेकंड, ही इज ईटिंग, इजंट ही. नाउ दिस इज द क्वेश्चन पार्ट एंड दिस इज द सेंटेंस. So for separating this we have used comma. Okay, then capital letter. We use capital letter at the beginning of a sentence.
सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं. एग्जाम्पल, माई नेम इज पुनीत. नाउ सी, माई, एम इज कैपिटल. ओके. टू बिगिन प्रॉपर नाउन्स को भी बिगिन करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं. एग्जाम्पल, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. सबसे पहले सेंटेंस के बिगनिंग में यूज हुआ, फिर इंडिया जो है प्रॉपर नाउन है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड कैपिटल आई हियर. ओके. फॉर प्रोनाउन आई के लिए भी हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं. एग्जाम्पल, आई लाइक सॉन्ग्स. ओके. देन टू बिगिन ईच न्यू लाइन ऑफ अ पोएम. ईच न्यू लाइन, नई लाइन बिगिन करने के लिए पोएम में. ओके. एग्जाम्पल, पूसी कैट, वेयर यू हैव बीन. नाउ PW. ओके, पोएम के बिगिनिंग में भी हम यूज करते हैं. देन कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास. कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड टू शो द एक्चुअल वर्ड स्पोकन. कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास वो शो करते हैं जो एक्चुअल में बोला गया है. ओके. एग्जाम्पल, first Rahul said, I am doing my homework. So this is the actual thing that was said by Rahul. So to separate this or to indicate this thing, we used inverted commas. Then again, second, Neha said, give me that blue pen. Now again we have used quotation marks. Okay. Then apostrophe. This is apostrophe. An apostrophe is used in the possessive format nouns. पोजेसिव फॉर्मेट में पोजेशन या बिलोंगिंगनेस शो करनी होती है तो हम अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट राज पेन. सेकेंड, माई फादर्स कार. ओके. एन अपोस्ट्रोफे इज ऑल्सो यूज टू ओमिट लेटर्स. लेटर को ओमिट करने के लिए भी यूज करते हैं. जैसे आई एम, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट आई एम. देन ही इज, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन राइट हीज. Then cannot, instead of that we can write can't. Okay. Then we have creative skill. Time to do A. Rewrite the following sentences using capital letter. Wherever necessary, put a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end of each sentence. Okay, now we'll rewrite these sentences. Okay. First, he is a good human being. Now first we'll write the H capital and in the end we'll put a full stop. Okay. Then second, alas, his grandmother is dead. Now alas, in the beginning of A we use the capital letter A, and after alas we'll put a exclamation mark, and in the end of the sentence we'll put full stop. Then third, wow, what a lovely painting. Now for W we use the capital letter W, then we'll put exclamation mark after wow. Then in the end also we'll put a question mark. Okay. Then fourth, Rahul is reading a book. In the beginning we use capital R and in the end we'll put full stop. Then fifth, why are you crying? Now in the beginning we use capital W and in the end we'll put question mark. Then sixth, what is your name? Now again we'll use capital W in the beginning and in the end we'll put question mark. Then B, put commas wherever necessary. Okay. First, he ate an orange, 2 bananas, 3 strawberries and 1 apple.
Now we'll put first comma here, then here, that's it. Then second, rose, marigold, jasmine and henna are flowers. Now we'll put comma here, then here. Okay. Then third, horse, lion, elephant, tiger and hippos are animals. Now we'll put here, here and here. Okay. Then fourth, Sam, come here. Now we are indicating to a specific person. So here we'll use comma. Okay. Fifth, give me my key, Reena. Again we'll use here and in the end full stop. Okay. Then sixth, potato, tomato, brinjal, cauliflower and peas are vegetables. Now we'll put comma here, here, here also, and in the end we'll put full stop. Then C, use quotation marks wherever necessary. Okay. First, she said, mind your own business. Now, this is the exact words which is said by she. So, we'll quote this. Okay. Then second, Rohit said, please come here. Again, we'll quote this. Okay. Then third, Jhalak said, I am writing a letter. Now again we'll quote this. Then fourth, give me a pen, said Varun. Now we'll quote this. Okay. Then fifth, why are you laughing? Asked Mohit. Now we'll quote this. Then we have D, rewrite the sentences using apostrophes wherever necessary. Now we have to put apostrophe. First, it is Ravi's pencil. Now we'll put apostrophe. Here we have put the apostrophe. Okay. Second, this is Varun's pen. Now I'll write the answer. Then third, that is my friend's house. Now I'll write the answer. Then fourth, it is my father's purse. Again I'll write the answer. Okay. Then we have review. We use punctuation mark in order to make the meanings of written words clear. Punctuation marks का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हमने written words लिखे हैं उनका meaning clear कर सके. Okay. Full stop, question mark, exclamation mark, comma, capital letter, quotation mark and apostrophe are some common punctuation marks. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.